Check the mic and make sure it sound right, boys. Check the mic and make sure it sound right, boys. गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारायण। और रात में रुका था इस तरह के जो कंटेनर्स के रूम्स बने होते हैं उनमें। और आज हम जाएंगे गिलगित जाएंगे। ठंड काफ़ी है, मौसम फ़िलहाल ठीक है, बादल हो रहे हैं हल्के हल्के। अब चलते हैं, अब पहले नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं गिलगित। बाबूसर टॉप यहाँ से है 70 किलोमीटर एंड झील लुलुसर 52। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है कुछ ही दिन पहले। जहाँ जहाँ वाटरफॉल आता है वहाँ पे रोड टूटा मिलता है और जगह जगह वाटरफॉल आता है। कभी कभी तो कोई इतना तेज़ होता है गाड़ी का भी बहाल हो जाता है। रोड इतने अच्छे नहीं हैं यहाँ पे, बस कहीं पे थोड़ा सा टुकड़ा आता है बस। It sound right, boys. Sound right, boys.
अभी यहाँ पे ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है, शायद कुछ ही दिन पहले बनाया गया है, आगे भी बन रहा है। It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. रोड नज़र आ रहा है, वो कहाँ तक ऐसे जाना है हमें। सच अमेजिंग। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी हम पहुँचे हैं कहीं छलखंड के पास। सर्दी बहुत ज़्यादा है और रास्ते में बच्चे नज़र आ रहे थे, तो मैंने बच्चों को टॉफ़ियाँ दे दी। मैं इनके लिए लेके आया था, मतलब जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं टॉफ़ियाँ लेके आया था। टॉफ़ियाँ दे दी हैं इनको। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अभी ये शाहिद के पास हम रुके, तो ये इसके जानवर भी रुक गए ना, मतलब थोड़ा सा घास खाया फिर ये भी रुक गए। It sound right, boys. वेलकम टू लुलू सर दूधीपत नेशनल पार्क। Sound right, boys. हम पहुंच चुके हैं वादिया फैसल में।
इस जगह का नाम है बेसल और इसकी बुलंदी जो है वो 10,432 फीट है। बाबूसर टॉप यहाँ से है 17 किलोमीटर। बाइक भी ज़्यादा चल नहीं रही, शायद ये चढ़ाई चढ़ रही है, तो मतलब बाइक का भी असर ख़त्म होता जा रहा है आस्ता आस्ता। वाओ, व्यूज़ आर स्टनिंग, अमेजिंग व्यूज़। लुलू सर झील। It sound right, boy. डेंजरस रोड, बहुत ही खतरनाक रोड है। Check the mic and make sure it sound right, boy. वाओ, पीछे व्यू देखें क्या ज़बरदस्त है, पहाड़ों पे बर्फ़। ये है गेटी रास और गेटी दास, और इसकी जो हाइट है, अल्टीट्यूड है, वो 11,770 फीट है। बड़ी देर से ना रोड पे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, ना है कोई आबादी आ रही है। अभी आई है काफ़ी देर के बाद एक गाड़ी। पूरा रोड ये सामने नज़र आ रहा है खाली का खाली है, कोई पीछे से गाड़ी भी नहीं क्रॉस कर रही, कोई आगे से भी नहीं आ रही, बहुत ही कम। और टूरिस्ट भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं इस एरिया में। It sound right, boys. बाइक की भी बस हो गई है ऊपर चढ़ते चढ़ते। व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। बाइक की भी बस हो गई है, बाइक भी बोल रही है नहीं चढ़ूं तो बेहतर है, लेकिन देखें बहुत ही स्लो गाड़ियां चढ़ रही हैं ऊपर। राइट, बाबूसर टॉप, यस वी डिड इट। बाबूसर टॉप बुलंदी है 13,691 फीट और बहुत ही मुश्किल था। ऊपर बहुत ठंडी हवा है। मोटरसाइकिल की भी बस हो गई थी ऊपर आते आते और फाइनली हमने कर लिया।
हम इस वक्त हैं बाबूसर टॉप पे, जिसकी बुलंदी है 13,671 फुट और बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। टूरिस्ट पुलिस है, उसकी जो गाड़ी है वो डिफरेंट है, कलर बहुत प्यारा है उनकी गाड़ी का। बाबूसर टॉप पे बहुत सर्दी है। अब सारी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उतराई है, नीचे है ढलवान है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि चिलास आएगा, तो यहाँ पे मकामी लोग बोल रहे हैं कि चिलास में गर्मी है। ओए होए 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 होए, व्यूज़ आर स्टनिंग। देखें कैसे रोड उतर रहा है, लेकिन फोकस ड्राइविंग पे रखें, रोड पे आस-पास मत रखें, रोड पे रखें अपना फोकस। चिलास में बोल रहे हैं मौसम नॉर्मल है, गिलगित में भी नॉर्मल है अभी। यहाँ पर तो बहुत सर्दी है। It sound right, boy. लो जी, बारिश शुरू हो चुकी है। It sound right, boy. दे रहा हूँ उठा लो। Check the mic and make sure it sound right, boy. वाह, ये पीछे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, यहाँ पे भी हो रही है हल्की हल्की बिल्कुल। और ये देखें, हम उतर आए हैं बाबूसर टॉप से और ये हैं सामने के नज़ारे। सर्दी, हाँ सर्दी की हल्की सी कम हुई है। वाह, आगे कॉर्नर में सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे हैं। डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। वो कहाँ से उतर के आए हैं हम पता ही नहीं चल रहा। वेरी डेंजरस। It sound right, boy. अभी रास्ते में हम रुके हैं। इस जगह का नाम है ठक। ये बच्चे बता रहे हैं। और रास्ते में इस तरह के कुछ वॉशरूम्स मिलेंगे जो कि फ्री नहीं है, लेकिन 20 या 30 रुपए में आपको मिल जाएंगे वॉशरूम की ज़रूरत हो तो।
boy. Big sound, big sound, big sound, big it sound right, boy. Big sound, big sound, big sound, big it sound right, boy. वाओ अमेजिंग व्यूज। अब नज़र आ रही हैं बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियाँ और इधर से हम उस तरफ जाएंगे, सीधा रोड भी नज़र आ रहा होगा आपको। वाओ अमेजिंग। It sound right, boy. ये अच्छा रोड सिर्फ नारायण से तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे आने के बाद है, उसके पीछे तो बहुत गंदा है। ये भी सारा सही नहीं है, टुकड़े टुकड़े बहुत ख़राब हैं। चिलास 8, चिगलू 86, गिलगित 125। वही अभी 125 किलोमीटर बाकी है गिलगित। It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. It sound right, boy. वाओ अमेजिंग अमेजिंग व्यू। और रोड भी मतलब सही आ गया है, अच्छा लग रहा है। ये आ गया जी कराकोरम हाईवे। N15 आके मिल गई है दोबारा N35 में, और अब ये हो गया है N35 कराकोरम हाईवे। दिस वे इज़ गिलगित और उस तरफ चिलास और बिशाम सिटी वगैरह। वाओ ज़बरदस्त।